Hello guys, how are you? Today our topic is to install duck drive in the Termux. First you have to install Metasploit and Termux. If you don't know how to install Termux and Metasploit in Android or PC, so check the description. I have given the link in the description, or on the video icon shows that video how to make और इंस्टॉल टर्मक्स। तो आज की हमारी वीडियो है कि हम टर्मक्स में मेटास्प्लॉइट इंस्टॉल करने के बाद डक ड्राइव कैसे इंस्टॉल करें। ये हमारी एथिकल हैकिंग की दूसरी क्लास है, तो स्टेप बाय स्टेप आपने सब कुछ करना है, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी, और जो कमांड मैं आपको बताऊंगा वही कमांड आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। प्लीज़ फॉलो द स्टेप्स एंड कमांड्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन और ऑन द सबटाइटल्स ऑफ वीडियो। सो लेट्स डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव द कमांड क्लियर। सबसे पहले आपने कमांड देनी है क्लियर की। ये क्लियर हो गया, इंटर करना है आपने। देन यू हैव टू गिव द कमांड apt अपडेट। तो उसके बाद आपने apt अपडेट की कमांड देनी है। तो ये वर्किंग स्टार्ट कर दिया है, इट स्टार्टेड वर्किंग। सो follow the steps, don't skip the video, and we are making or installing duck drive. After this we make a payload. By making payload we able to hack Android mobile. So after this we have to give the command apt upgrade। तो उसके बाद हमने apt अपग्रेड की कमांड देनी है। जैसे ही हम apt अपग्रेड की कमांड देंगे तो उसके बाद हमने y लिखना है। जैसे ही हम y सिलेक्ट करेंगे आपने इंटर कर देना है y। सो इट्स वर्किंग, वेट फॉर इट्स वर्क एंड it takes about 5 minutes. So I'm telling you that how it works. First of all you have to install Termux, then Metasploit that is described in the first video, and then you have to install the duck drive। पहले तो आपने टर्मक्स इंस्टॉल करना है, उसमें मेटास्प्लॉइट इंस्टॉल करना है। अगर आपको वो नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से पहली क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने डक ड्राइव इंस्टॉल करना है। अब हम सेकंड क्लास में डक ड्राइव ही इंस्टॉल करना है। स्टेप्स को फॉलो बाय फॉलो कीजिएगा ताकि कोई एरर ना आए। अगर आपके पास कोई एरर आ रहा है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो इट्स वर्किंग। आई एम स्किपिंग द वीडियो, पॉज द वीडियो, व्हेन इट फिनिश्ड आई शैल रिज्यूम इट, सो डोंट वेट। तो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, आवर प्रोसेस हैज़ बीन कंप्लीट। तो नेक्स्ट कमांड इज़ pkj पैकेज install python y, checking the availability of current mirror, it's working। तो ये भी वर्क कर रहा है। तो इसके बाद हमने जो नेक्स्ट कमांड देनी है, आपने स्टेप बाय स्टेप कमांड्स को फॉलो करना है। अगर आपने वीडियो स्किप करेंगे तो फ़ायदा नहीं है उसका। ये हमारी हैकिंग की दूसरी क्लास है। अगर आप
इथिकल हैकिंग कोर्स फ्री में हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो इट्स वर्किंग, जस्ट वेट अ मोमेंट। 22% complete. Python installing। पाइथन इंस्टॉल करना लाजमी है, कमांड को स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो कीजिएगा। तो बाकी कमांड्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, गलती ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि आपके लिए मज़ीद हैकिंग के कोर्स में एडिशन करें, इजाफ़ा करें। तो 37% ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। वेट 10 to 40 seconds for this completion. After installing duck droid, we were able to make the payload a virus from which we can hack a mobile, Android mobile, iOS mobile. If we hack a mobile, then we have ability to take their all data, and through which we can send, if we send a message to hack a WhatsApp, then we receive here a message and we can hack his WhatsApp, and by restore the WhatsApp we can see all the messages. So after this course we shall discuss about the next course of hacking. So it's working, it's almost complete. Wait a moment. Our next command is package install git y. Then okay, checking the availability of current mirror. Okay, we have to clear, command clear. Okay, then git clone https://github.com/ you have to give any name here that you want. I'm giving T for Termux /duck underscore droid, and okay. Cloning into duck droid, it's working. Enumerating objects 19 done. So then we have checked the list, give command ls, duck droid is installed. So after you have installed the duck droid, comment and let us know you have installed it. So wait for the next class and we shall make a virus. You have to install first Termux, then Metasploit, then duck droid. These are very necessary to make a virus. So tomorrow is our next class and we shall make a virus and send it to others by practically, and I shall tell you how to hack Android and all its objects like SMS, contacts, WhatsApp, Facebook, etc.
So stay connected with the video, subscribe the channel, and Allah Hafiz.